एंड लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस देखे थे, बेसिक ऑपरेशन। हम कंटिन्यू करते हैं सेट और डिक्शनरी में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। चलते हैं हमारे कोड बेस में। ओके, तो कोड बेस में, सॉरी केस फॉर इंटरप्शंस, कोड बेस में मैंने थोड़ा बहुत ये डिज़ाइन कर रखा है। मैं आपको बताया तो ईजी है। बेसिकली मैंने क्या करा, एक सेट क्रिएट करा, जो मैंने आपको डिक्लेरेशन ऑलरेडी बता दिया था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो लास्ट वीडियोस में जाके। ओके, तो ये मैंने दो सेट क्रिएट करे, मैंने प्रिंट वी और वी वन करा दिया, मुझे ये दे दिए दोनों आउटपुट में। ओके, अभी आप यहाँ मत देखना, मैं ये आपको बताऊंगा डिक्शनरी फॉर द सेम डिक्शनरी पार्ट। डिक्शनरी में मैंने वही की वैल्यू पेयर मैंने दे दी, वन एंड विक्की फॉर द टेस्टिंग पार्ट। बेसिकली मैं सेट में विद द हेल्प ऑफ indexing, I'm not able to use that, showing the throw error. I'll show you. Okay, that's showing the error. Why I'm not able to use? मेन रीजन इसका ये है, सेट में हमने जाना था लास्ट वीडियोस में कि ये इम्यूटेबल होता है एज वेल एज ये इन ऑर्डर्ड होता है, which cannot able to access and any update in this case. Okay, so I'll just comment out for that. Okay, similarly for that, I'm not able to use the d0, that's showing the error. For the dictionary part, I'll use the value of key, that's showing the pair side, right? I'll just use for the two part, that's showing that represent the output of Raj, right? The value of 2 is showing the Raj. I just use the 3. Okay, that's showing the output of Mohan. Okay, similarly, for the set operation, the some basic set operation, like for the sets part, which you already covered in the 9th and 10th classes, in the previous classes, as well as uh, uh, जहाँ हमने उसमें देखा था वेन डायग्राम्स के थ्रू सेट्स ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, बेसिकली इंटरसेक्शंस, यूनियंस, डिफरेंसेस, सिमेट्रिक। मैं फिर भी आपको एक बार बताता हूँ, यूनियन एक बेसिक फंक्शन होता है। यूनियन एक बेसिक फंक्शन होता है, उसमें उसमें ऐसा ऐसा कुछ ही नहीं होता। बस वन जो कॉमन कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक साथ शो करता है, राइट? I'll just try for that only for distinct element available, not duplicate, that showing in this case 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 4. That's showing the outputs 7 and 8 as well as that's showing the output. That 3 and 3 is not is also present in this case. That the union part is for the showing only for distinct variables, distinct elements. Sorry. Okay. Uh, for the union part, I'll just comment out for the V2. V2 that's showing the intersection part. द इंटरसेक्शन पार्ट, बेसिक यूज ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट हमने जो प्रीवियस क्लासेस में भी देख रखा है हमारी स्कूल क्लासेस में। बेसिक इंटरसेक्शंस, like for the two that showing the basic intersection 3 and 3, the common part in V and V1 that showing the output, right? That showing the output 2 and 3. Okay, the basic difference, similarly for the difference part, that showing the difference that which is present in this case, and which is present, the sum element is present in this case, it's subtracted in the element that showing that element only, right? Like one, जिसमें इसमें क्या है, 1 2 3 4, और इसमें 2 7 8 3, 1 2 with 2 is present in this case, so 2 is deleted, and 3 is present in this case, 3 is deleted. That's showing the output of 1 and 4. I'll show you. That's showing the output only for 1 and 4. This is for the difference part. For the symmetric difference part, basic symmetric difference part is like that which is not present on the intersection, other than intersection, in like you can imagine for the Venn diagram, the other than intersection part is present, that showing the output of the symmetric difference. Okay, 147. You can go through as well as in a Google for better understanding related to that. You have to learn that. Okay, just I just comment on all this. uh, और बेसिक ऑपरेशन, इसमें और ऑपरेशन देखते हैं, लाइक वी मैंने यहाँ पर लिया था वी पॉप। पॉप अगर मैं यहाँ पर सेकंड इंडेक्स अगर पॉप करना चाहूँ, इसके लिए ये एरर देगा मेरे को, नॉट फॉर द सेकंड इंडेक्स, आई जस्ट यूज फॉर द टू पॉप। ओके ओके, टू पॉप इज आल्सो नॉट फॉर, ओके, remove part. Okay, okay, showing the typo, right? Showing the typo. We dot two. Just remove the two. Okay.
It just remove the two that I showed. Okay. Okay. Basically, it removes the two in the set one, set V, in showing the 134. Okay. With the help of you can modify the particular set. Okay. As well as you can add insert part as well as add part. I want to add two in this case. Okay. I just add two for that case. That's showing the two. 20, 120. That's showing the output of 120. Okay. Now it's working fine. uh, you can add, you can with the help of add, you can add extra element in the last of the end. Okay. This is the part for the set, all the part for the set which is covered for the basic operation on that, जो मैंने बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर कवर कर दिया. सिमिलरली फॉर द डिक्शनरी, द बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिक्शनरी यही होते हैं. एंड यू कैन चेक एज वेल एज इन W3 स्कूल एज अ रेफरेंस. W3 स्कूल में आप जाके चेक कर सकते हो. वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके के अच्छे से समझा रखा है. एंड इज लाइक एज अ रेफरेंस आई विल गिव दैट W3 स्कूल एज अ प्रिस्क्राइब्ड, which is good learning part as well as. Okay. So thanks for watching this video. I'll continue with the video for the next part of the type checking, type conversion, as well as some operation perform, like mathematical operation perform in Python. Okay. Thank you so much for watching this video.